Uh, I'm introducing not for your purpose, but actually I wish to tell the participants. वो मैं बता दूंगा, but थोड़ा सा आप बता दीजिए. Thank you, sir. Participants, today we have a very learned speaker from Department of Civil Engineering, Aligarh Muslim University, Aligarh, Professor Masroor, Muhammad Masroor Alam Sahab. He has completed his MSc Geology and he got research associateship in 1997. The MPhil and PhD are in the field of sedimentology related to petrophysis and diagnosis, sandstone of Jaisalmer and Marwar basin of Rajasthan. First, he joined Department of Geology as a lecturer in 1996 at AMU, Aligarh. Later, he joined Department of Civil Engineering in 1997 as a lecturer of engineering geology. Professor Masroor Sahab developed an engineering geology course lab and started a new course as geoengineering of rocks and rocks mosses and rocks engineering apart from the basic course of engineering geology. He also taught remote sensing and GIS, petroleum, geology and exploration. Professor Masroor Sahab delivered various lectures and disaster management, environmental stresses and strain at various forums, especially UGC, HRDC of different universities of India and especially in Aligarh Muslim University. Apart from this, he has a various contribution and I will say that in various paper he has published. Research interest includes engineering geology, geoengineering, I told you the earthquake engineering, sedimentology, disaster management. He is a departmental coordinator of BTech for NBA. अभी NBA पे बात हो रही थी, आप लोगों ने सुना था एक लेक्चर. Masroor sir completed a research project worth of 5.88 lakhs, awarded DST under Young Scientist scheme during 2003 to 6. Apart from teaching assignment, he have a long association with the students, extracurricular activities as a pros, Nadeem Tareen Half, and member of AMU Court and Academic Council. With these words, I'm not going into detail. I would like to invite Professor Muhammad Masroor Alam Sahab to deliver on the topic climate change, pollution, waste management, and biodiversity conservation. Sir, now mic over to you. Thank you. Now, as I am being introduced by Dr. Aftab, thank you. The thing is that I am a student of earth science, particularly geology, but I am teaching in Department of Civil Engineering. What is civil engineering is all about? The civil engineering is a subject which is related to construction, But what I tell my civil engineering student in their very first lecture, that civil engineering starts with destruction. Civil engineering starts with destruction, then it may go for some kind of construction. So the issue is that how much we can destruct and how much we can construct, what is there at our hand, and how much we can go. Now, as you are doing this course, training course, I have also done as an induction training program, then orientation program, then different refresher programs. So whatever you are in position as Excuse me, sir. Now, yeah. Sir, use both language, sir. What? Both language, sir. Both language. Okay. So Thank you, sir. teacher is the first learner. Teacher is the first learner. Why we are here today? We will be learning something. And that's something which is very important for our survival.
एक टीचर की डेफिनेशन ये है कि एक बॉय या एक गर्ल जो स्कूल गई और फिर कभी बाहर नहीं आई, स्कूल से वापस नहीं आई, दैट इज टीचर. टीचर इज अ बॉय, अ गर्ल who goes to school but never comes out. So you are from different subjects, you are from different background, and we will be discussing a topic which is very close to our survival, that is climate change. I have also included here pollution, waste management, and biodiversity, because everything is interconnected and related. Now you must be experiencing the climate change nowadays personally. I think that after answering the queries, you can write, if you are agreeing with the issue that the weather you are facing today or in a last month or last week, is it somewhat harsh? Why it is so? So that is the issue. So I will be going a bit fast. The slide I am changing. Climate change. Is this a news or a fact? Now I have put some newspaper cuttings. I am not claiming to tell you things from different research journals and books and whatnot. I'll be keeping my topic in a very generalized way, and I will show you the newspaper cuttings only, that what is coming on daily basis. And on most of the newspaper cuttings, you will find the date on which I have collected this. Now, for example, if you can read Europe, heat is real, not Renoir. Heat is real, not Renoir. The heat wave in Europe has brought people to swimming pools and fountains. But in last some 50 to 100 years back, this heat or sunshine was rejoiced by the Europeans, and they used to paint the sunshine and all those things. Means they were needing some heat because the temperature there is very low. They are living in temperate regions and their temperature is very low. It was mostly cold areas. This is the reason that Britishers and French and Germans, every European countries, they went out of Europe and found out new areas, new land in tropical climates, hot climate. They preferred going to hot climate rather than living in the cold climate. So is this a news only or is it a fact? Very first time in 1978, United Nations Academy of Science has accepted that there is a global warming. Scientists have started doing research and they have started doing a lot of discussion, and finally in 2007, UN has accepted that yes, there is a global warming. Overall temperature Earth का बढ़ रहा है. It was accepted in 2007. Another issue which came is that कि ये जो temperature बढ़ रहा है, is this a natural phenomenon or is it because of human activity or anthropogenic activities? So this question became very important. But even if there are people, there are scientists, there are countries, heads, they are not accepting that the global warming is because of human activities. They are not confirming to this. But even if there is no human activity, there is no human cause, but still the overall temperature is rising. So we will be able to see that what could be the reason, what could be the cause.
Now, Earth is the only planet on which life exists. There is no other planet where there is a life. Why there is a life on this planet Earth? Number one, its position from the sun. In planetary system, it is at the third place. First Mercury, then Venus, then Earth. So the distance from the sun of Earth has resulted into maximum and minimum temperature range of plus 60 degree and minus 60 degree centigrade. In this temperature range, the most essential thing for the life to thrive is water. In this temperature regime of plus 60 to minus 60 degree centigrade, water can live in all the three phases. तीनों अवस्थाओं में पानी रह सकता है, बर्फ के फॉर्म में भी, वेपर के फॉर्म में भी और जल लिक्विड के फॉर्म में भी. Water can remain in solid, liquid and vapor phase, changing its phase by moving from one place to another. Another important thing is the Earth's gravity. The गुरुत्वाकर्षण बल जो है जिसने हमारे प्लैनेट में डिफरेंट गैसेस को रोक रखा है. The value of G which we have, it has held up the atmosphere in which we have nitrogen and oxygen and mainly, and then carbon dioxide and methane and water vapor, etc., etc., etc. Carbon dioxide 71% and 71%, oxygen 28%. Sorry, I am just missing this. 78% nitrogen, 21% oxygen, in remaining 1% all the gases. In remaining 1% all the gases. So the gravity, why Earth has this much of gravity? Other planets have low gravity, that's why they don't have atmosphere. So the Earth was made in a way, it was placed in a way that life can come and survive. Now carbon dioxide, which is the most important gas which is bringing us the global warming, has only 0.004% as far as the total gases are concerned. Very less. 1%, आधा परसेंट भी नहीं, 0.25% भी नहीं, 0.004%. So just see, now we have on the our Earth system, we have different spheres. Atmosphere जिसमें हमारी सारी gases हैं, biosphere where we have all life forms, animal, human beings and vegetation, hydrosphere all the waters which we have, may it be in solid form, liquid form or gaseous form. Lithosphere is the topmost layer of the earth up to 200 kilometers. Litho means rock, sphere of the rock, जिसपे हम रह रहे हैं, जिसमें से हम सारा मटेरियल यूज कर रहे हैं for different purposes. Then we have asthenosphere, which is from 200 kilometers below the ground to 1000 kilometers. यानी 800 kilometers asthenosphere है. From 1000 to 6371 kilometers we have barysphere. Bary का मतलब होता है very very hot, just like a fire. So we have barysphere almost 5671 kilometers. Our Earth's internal structure has been divided into crust, mantle and core. Crust is divided into upper crust, lower crust. Mantle is divided into upper mantle and lower mantle. Core is divided as an outer core or inner core. So upper crust, lower crust और little part of upper mantle अगर हम ऐड कर दें तो वो लिथोस्फीयर हो जाएगा, और बाकी जो बचा है अपर मेंटल का पार्ट और लोअर मेंटल का कुछ पार्ट मिला लें तो वो एस्थेनोस्फीयर हो जाएगा, और बाकी जितना भी एस्थेनोस्फीयर और आउटर कोर और इनर कोर है वो बैरीस्फीयर हो जाएगी. तो ये सारे स्फीयर्स हैं जिनका आपस में इंटरैक्शन है इन सम वे और अनदर.
अब इन स्फीयर्स में हमने एक स्फीयर और जोड़ दिया, उसका नाम क्या है? बिल्ट स्फीयर। हमने एक स्फीयर ह्यूमैनिटी ने एक स्फीयर इसमें ऐड कर दिया, जिसको हमने बिल्ट स्फीयर किया। घर, सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, क्या नहीं हमने इसमें ऐड कर दिया। और कहां से ऐड किया? फ्रॉम वेयर वी हैव गॉट ऑल दिस मटेरियल? We got all this material from either atmosphere or biosphere or hydrosphere or lithosphere. So human beings have created one more sphere which God has not created. And in doing this, we have polluted atmosphere, we have polluted biosphere, we have polluted hydrosphere, and we have polluted lithosphere. The interaction of asthenosphere and lithosphere brings the earthquake and volcanism. It brings earthquake and volcanism. So that is also important. Now, what is climate change? Climate change can be warming, which we are seeing today. It can be cooling also. It can be excessive precipitation for a very long duration for decades. Or if there is an overall change in the wind pattern, that is also a climate change. Now, this kind of climate change have had taken place in the life of the Earth, which is almost 4,550 million years old. This kind of changes naturally have taken place many, many times, and we have evidences of all these. Now, we are concerned with warming because it is pinching us. And this warming is not only on the land, but also it has taken place over the oceans. How much it has warmed on land or ocean? We have compared it with some data 200 years ago or 150 years ago. We have a record of almost 150 years of direct temperature recording. Before that, before 150 years, we had record of temperature in an indirect way. Direct way means जब हमने थर्मामीटर इजाद कर लिया, तब से हमने डायरेक्ट मेजरमेंट शुरू कर दिया। जब तक थर्मामीटर नहीं था, तब हम टेम्परेचर को कैसे मार्क करें? तो उसके लिए वी हैड सम इनडायरेक्ट मेथड. Now, again, if you can see some newspaper clipping, Roger Federer, when he lost his match to John Millman in 2018, he said that I have lost because of the heat. The heat is so much, so high that I could not withstand the heat of Australia, and he lost the match. So he blamed the excessive warmth. In another picture, you can see omelette is being cooked. Omelette is being cooked in sunshine. Deepika Thalyari has raised hand. Please write your question in message. Please write your question in message. I will be able to take up that. Now see this picture. In the same season, during the same months, in America, the temperature was minus 39 degrees, and in the same month, the temperature in Australia was more than 40 degrees. Of course, they were in different climatic belts, but see the extremes. If you can see in the left picture, the jeans pant, they are standing without men or women inside it. These jeans pant got frozen. In the right side picture, what you can see, there is a forest fire in California, and in the lower picture, there is a forest fire in Haiti. In California and in many countries of Europe, the forest fires are ravaging from last 10 years, and they have not been able to doused by the so-called developed countries. Why? Because there is so much high temperature that if you douse the fire at one end, on another end, the fire will start.
Now, is this climate change is natural or anthropogenic? That is the main issue. That is the main issue. And on this issue, the scientists, they are fighting with each other. There are a group of scientists who are saying that there is a climate change and the cause is anthropogenic. There are scientists who say that there is no change, and there is a group of scientists that yes, there is a global warming, but it may be due to the natural causes. So we have to see that how much human beings are contributing and how much nature is contributing into the global warming, or it can contribute in the global warming. Now, from 1880 to 1910, there was a temperature lowering also by 0.5 degrees centigrade. From 1935 to 1975, the temperature has remained same. From 1975 to 2010 and 2020, the temperature is rising at the rate of 0.75 to 1.25 degrees centigrade, and today's data says that it has gone beyond 1.5 degrees centigrade. In 1993 also there was a cooling phenomenon, and that cooling phenomenon is called as Mount Pinatubo effect. Mount Pinatubo एक वोल्केनो है, उस वोल्केनो में वोल्केनिज्म हुई जिससे वोल्केनिक ऐश निकल के एटमॉस्फेयर में गई और जिसने पूरे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होने के बाद टेम्परेचर को कट कर दिया, जिसकी वजह से टेम्परेचर 1993 टू 1995 कम हो गया. Now, for all this, we have some direct evidences and we have some indirect evidences. We have direct evidences as well as some indirect evidences. Now, in this graph, you can see that from 1860 to 1880, the temperature has risen by 1 degree. From 1910 to 1940, it has risen by 1.5 degree. And from 1975 to 2005, it has gone up by 1.9 degree. But at the same time, from 1880 to 1910, there was a global cooling also. The temperature has gone down, and from 1940s to 1975, the rise in the temperature was much slower. So what could be the natural factors which can change our temperature? They may increase the global temperature or they may decrease the global temperature. What could be the causes? Natural causes. So first natural cause is the solar insolation. Whatever heat, whatever warmth we are getting, it is because of solar energy which we are receiving. So solar insolation is there. अब ये सोलर इंसोलेशन किसी वजह से नेचुरल प्रोसेस की वजह से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है? दैट वी हैव टू सी. इंसोलेशन जो है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में सन से आता है, अर्थ से टकराता है, अर्थ सरफेस से टकराने के बाद इट गोज बैक एज अ लॉन्ग वेव रेडिएशन, और जब वो एज ए लॉन्ग वेव रेडिएशन जाता है तो वो एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके सारे का सारा बाहर नहीं जा पाता. हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CH4, NO2 एंड SO2, ये सारे उसको रोक लेते हैं. इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है. यहां नंबर्स मिसिंग हैं. H2O, CO2, CH4, NO2 एंड SO2. These are all called greenhouse gases. वो सारी गैसेस जिसमें O2 होगा वो ग्रीन हाउस गैसेस होंगी. अब सोलर एनर्जी में चेंज हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है. ठीक है. और अगर ग्रीन हाउस गैसेस कम या ज्यादा हो जाएं तो ग्लोबल वार्मिंग में चेंज हो सकता है. अब ग्रीन हाउसेस क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस कहां से आई हमारे एटमॉस्फेयर पे? दे केम फ्रॉम डीगैसिंग ऑफ अर्थ. अर्थ से जो वोल्केनिज्म हुई पिछले 4.5 बिलियन ईयर से या 4,550 मिलियन ईयर से जो डीगैसिंग हुई, उससे जो गैसेस निकली उन्होंने ही हमारा एटमॉस्फेयर बनाया. उन्हीं में से कुछ गैस ग्रीन हाउस गैसेस बन गई. अगर ये ग्रीन हाउसेस गैसेस एकदम से खत्म हो जाएं
तो हमारा टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा पूरी दुनिया का एवरेज, जो कि 15 डिग्री या 20 डिग्री एवरेज है प्लस में, वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी हमारा टेम्परेचर 33 डिग्री डाउन हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन उतनी ही जितनी हमें जरूरत है। अब उसमें अगर हम बढ़ोतरी करेंगे, इफ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, देन द ट्रैपमेंट ऑफ सोलर इंस्टॉलेशन विल इंक्रीज एंड ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग विल इंक्रीज। कार्बन डाइऑक्साइड जो सिर्फ 0.004% है, उसमें थोड़ा सा भी इंक्रीज हो रहा है तो वार्मिंग बढ़ जा रही है। वेनस पे एटमॉस्फेयर में 97% कार्बन डाइऑक्साइड है और इसीलिए वहां का टेम्परेचर 480 डिग्री सेंटीग्रेड है। सी, ये सोलर इंसोलेशन का ग्राफ है कि सन एनर्जी आ रही है, अर्थ से टकरा रही है, वापस जा रही है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में लोअर पार्ट में ग्रीन हाउस गैसेस हैं और ग्रीन हाउस गैसेस हीट को ट्रैप कर रही है, जो हमें वार्म देती है। तो ये एक सिंपल सा ग्राफिक्स है। अब देखिए, अगर नेचुरल फोर्सेस की बात करें तो अर्थ का जो रोटेशन है सन के चारों तरफ, अर्थ इज रिवॉल्विंग, इज मूविंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, जिससे हमारे सीजन चेंज होते हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात का जो सीजन है नॉर्थ और सदर्न साउथ हेमिस्फीयर में, वो इसी से चेंज होता है। जब हम सन से दूर चले जाते हैं तो हम जाड़े में आ जाते हैं, और जब हम सन के नजदीक आते हैं तो हम वार्म में आ जाते हैं। तो अगर ये जो ऑर्बिटल मोशन है, सॉरी, जो ऑर्बिटल मोशन है, उसमें अगर डिस्टेंस बढ़ जाए या घट जाए तो ओवरऑल टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि प्लैनेट्स अपनी जगह छोड़ दें। अगर प्लैनेट्स ने अपनी जगह छोड़ना शुरू कर दी तो फिर तो प्रलय आ जाएगा। अब एक बात और है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है। अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, जिससे दिन और रात होता है। तो अर्थ की जो रोटेशनल एक्सिस है वो टिल्टेड है, ऑलमोस्ट 21 डिग्री पे टिल्टेड है। यू कैन सी द पिक्चर। अब अगर ये टिल्ट चेंज हो जाए तो क्लाइमेटिक बेल्ट्स जो है हमारी वो चेंज हो जाएंगी। इक्वेटर अपनी जगह पे नहीं रह जाएगा, इक्वेटर चेंज हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर चेंज हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न चेंज हो जाएगा, जो हमारे टेम्परेट लैटिट्यूड है सब चेंज हो जाएंगे। तो ओवरऑल टेम्परेचर रिजीम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, सोलर की रेस के आने से हो रहा है, इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती है, दैट्स व्हाई वी हैव गॉट द मैक्सिमम हीट। अब ये जो सुनामी आया 2004 में इंडोनेशिया में और 2011 जापान में, कहा जाता है कि उसकी वजह से सी में जो उथल पुथल हुई, उसकी वजह से अर्थ का रोटेशनल एक्सिस चेंज हुआ 22.1 डिग्री से 21.5 डिग्री। दैट मे हैव सम इफेक्ट, दैट मे हैव सम इफेक्ट। ऐसे ही सन के सरफेस पे एक एक्टिविटी होती है जिसको हम कहते हैं सोलर एक्टिविटी। क्या कहते हैं? सोलर एक्टिविटी, सन स्पॉट एक्टिविटी। सन के सरफेस पे हो क्या रहा है? हाइड्रोजन इज चेंजिंग इनटू हीलियम, हीलियम इज चेंजिंग बैक टू हाइड्रोजन, इसी से हीट जनरेट हो रही है। अगर ये एक्टिविटी और ये प्रोसेस बढ़ जाए तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। लेकिन ऐसा भी जो रिसर्चेस हुई, जो कॉस्मोजेनिक आइसोटोप कंसंट्रेशन को लेके रिसर्चेस हो रही हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को लेके, उससे ये प्रूव नहीं होता कि सन स्पॉट एक्टिविटी से कोई अर्थ के टेम्परेचर पे कोई चेंज आया है। देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं 2014 में जो सन स्पॉट एक्टिविटी हुई है। आर यू एबल टू सी इन द डायनेमिक मोड? कोई भी मुझे आंसर कर दे यस या नो में। Are you able to see the things in dynamic mode? This is called sun spot. Yes, sir. Yes, Okay. yes, sir. Okay. Thank you. Thank you. See the latest one. Okay. The latest one in 2019, that is this picture. This picture, sorry, 22. The same thing has happened in 2022. And in past it has happened. But it has been said that this has not a major effect as far as global warming is concerned. Now, as I told you about greenhouse gas production,
The greenhouse gas production is naturally produced through volcanism. So more the volcanism, more the greenhouse gases will come. In the past of the Earth's history, we had lot of huge volcanic events. For example, in Deccan volcanism in 65 million years back, Deccan volcanism. Our whole Maharashtra, almost 80% of Madhya Pradesh, almost 30% of Gujarat, almost 40% of Rajasthan, 40% of Andhra, they are all covered with volcanic lava flows. That means there was a lot of volcanism, and that has produced the different gases, including oxygen, carbon dioxide, nitrogen, and sulfur dioxide, and whatnot. But with time, जैसे जैसे अर्थ की एज बढ़ती रही, ये एक्टिविटी कम होती गई. Volcanism is taking place even today. In last 1 month, lot of volcanism has taken place in Indonesia. Lot of volcanism has taken place in Reykjavik Island. So volcanism is still taking place. Greenhouse gases are being added into our system. This may also have an effect on the global warming. Then ocean acidification. Ocean's water is becoming acidic with time. Why? Because it is dissolving carbon dioxide. Whatever carbon dioxide is produced in nature, mostly it is taken by sea and then by plants and then by some microorganisms. So ocean in last millions of years, tens of millions of years, it has dissolved so much carbon dioxide that it has become acidic. And with increase in the acidity of the ocean water, the dissolution of carbon dioxide is becoming less and less. यानी ओशन ने, समुद्र ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना कम कर दिया. तो जब वो कम करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी कहाँ? एटमॉस्फेयर में. और जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी तो वो ग्रीन हाउस गैसेस का पार्ट बनेगी और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देगी. तो अगर आप ये ग्राफ देख सकते हैं, इस ग्राफ में देखिए जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ग्लोबल ओशन वाटर टेम्परेचर आल्सो आर इंक्रीजिंग. सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लोबल ओशन टेम्परेचर. अब ग्लोबल ओशन टेम्परेचर बढ़ेगा या ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मसला क्या है? व्हाट इज द इशू? द इशू इज कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो समंदर तो बर्फ पिघलेगी तो समंदर के पानी का लेवल बढ़ जाएगा. ये सबसे बड़ा इशू है. अब अगर आप ये ग्राफ देख सकते हो तो आप में देखिए डिफरेंट कलर से दिखाया गया है कि सी लेवल बढ़ने का क्या कॉज है. तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है, लैंड वाटर स्टोरेज यानी जमीन का पानी समंदर में आ जाए तो भी ग्लोबल सी लेवल बढ़ेगा. अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाए तो भी सी लेवल बढ़ेगा. ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल जाए तो भी बढ़ेगा. लेकिन जो सबसे मेजर कॉज है अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने से सी लेवल बढ़ जाएगा. डार्क ब्लू सबसे नीचे और थोड़ा सा उसके ऊपर आप देखिए लाइट ब्लू की पतली सी लाइन. जब हम पतीली में पानी गर्म करते हैं, व्हेन वी हीट वाटर इन एनी यूटेंसिल, बिकॉज ऑफ हीटिंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस. तो जब समुद्र के पानी की हीटिंग होगी, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सी लेवल ऑटोमेटिकली राइज कर जाएगा. और जब सी लेवल ऑटोमेटिकली राइज कर जाएगा तो वो आइलैंड जो सिर्फ 2 मीटर और 3 मीटर ऊंचे हैं कोस्ट सी वाटर से, वो डूब जाएंगे. वो सारे कोस्टल एरियाज जो 4 मीटर 5 मीटर ऊपर हैं वो डूबने लगेंगे. तो मेन कॉज क्या है कि हम जिसके लिए वरीड हैं वो आइस की मेल्टिंग की वजह से वरीड है. अब आप देखिए राइट साइड में क्या हो रहा है कि जब सी लेवल बढ़ेगा तो कोस्टल इरोजन बढ़ेगा. जब कोस्टल इरोजन बढ़ेगा तो हमें अपना कोस्ट प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. कोस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? कंक्रीट के टेट्रापॉड्स और कंक्रीट के ब्लॉक्स लगाएंगे. दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम गोवा व्हिच आई हैव टेकन इन 2013.
अब हम जब कंक्रीट ब्लॉक बनाएंगे और कंक्रीट टेट्रापॉड्स बनाएंगे तो इसके बनाने में सीमेंट का खर्चा आएगा, एग्रीगेट का खर्चा आएगा, पानी का खर्चा आएगा, इसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, और बनने के बाद फिर यहाँ लाने का खर्चा आएगा, और यहाँ लाने के बाद ये ट्रैक्टर जो है, ट्रक जो है, वो इनको उठा उठा के रखेगा। यानी हम ये सारे काम ऐसे कर रहे हैं जिसमें और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहेगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन बढ़ता ही रहेगा, और उससे असर क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और मेल्टिंग होगी और सी लेवल राइज होगा। तो यानी हम ऐसे विशियस साइकिल में फंस गए हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं, किसी चीज को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी हम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन फुटिंग। अब ये क्या चल रहा है? ये वीडियो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज हैपनिंग हियर? अगर कोई मुझे बता दे कि ये क्या है, व्हाट इज दिस? किसी को अंदाजा है कि व्हाट इज दिस? यस दीपिका। Movement of plates, it's plate tectonics, movement of Very good. Very good. What is your subject area? says geography. Very good. Very good. Correct answer. This is a 10-second video which is showing what has happened in last 65 million years. पिछले 65 मिलियन ईयर में क्या हुआ, ये 15 सेकंड का वीडियो आपको बता रहा है। आप इंडिया को भी देख सकते हैं इसमें। इंडिया देखिए, ये अलग हुआ और जाके ऊपर जाके मिल गया। अब ये जब चेंज होगा तो इंडिया वॉज इन सदर्न हेमिस्फेयर, नाउ इट हैज मूव टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सारे कंट्रीज ने अपनी लोकेशन चेंज कर दी, तो सारे कंट्रीज का इक्वेटर चेंज हो जाएगा, लैटिट्यूड चेंज हो जाएंगे, तो क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा। लेकिन ये कब हो रहा है? 65 मिलियन ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स के स्केल पे हो रहा है, और ऐसा इससे पहले भी हो चुका है। This is a theory called as continental drift theory given by Alfred Wegener, which has been transformed into more refined theory in 1960s into the theory of plate tectonics. This is the latest which has happened, and even today this is happening. Even today different plates are moving at the rate of 5 to 10 centimeter per year. If you can see this map, the rate of movement of each plate has been shown. So this is happening, यानी कॉन्टिनेंट्स अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बदल रहे हैं। अगर 5 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर का रेट है इनके मूवमेंट का, तो पिछले 200 साल में कितना चेंज हो गए होंगे? ये 1 मीटर से लेके 2 मीटर तक इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी होगी 200 साल में, जो कि बहुत कम है। मैं 200 साल कह क्यों रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड विच वी आर having, which were drawn some 200 years ago, वो अब एक्चुअली वो है नहीं। अर्थ ने अपनी पोजीशन 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर अपनी जगह चेंज कर दी है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। ऑस्ट्रेलिया ने इसीलिए अपने नए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाना शुरू कर दिया है, और अनमैन्ड ड्राइविंग कार, अनमैन्ड ड्राइवरलेस कार की भी यही प्रॉब्लम है कि हम तो उसको ग्राफिक जो हमारा सिस्टम है, जीआईएस है, और हमारा जो गूगल मैप है, हम उसके हिसाब से उसको रास्ता बता दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड चेंज हो चुका है। दैट्स व्हाई ड्राइवरलेस कार्स आर मीटिंग एक्सीडेंट। अब ये जो प्लेट का मूवमेंट है 5 to 10 सेंटीमीटर ईयर, वो क्या है? उसको हम कैसे समझें? दिखाई तो दे नहीं रहा है। अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है बहुत फास्ट, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। ये तो बहुत स्लो मूवमेंट है। तो इसको समझने के लिए देखिए, ये मैंने एक पिक्चर यहां लगाई है। मैंने इलेक्शन में वोट दिया 2017 में, और फिर मैंने अपने नेल्स को ग्रो होते हुए और कटते हुए मैंने फोटोग्राफी की। यानी जिस रेट से हमारे नेल्स बढ़ते हैं उसी रेट से प्लेट्स का मूवमेंट होता है। हम अपने नेल्स को रोज बढ़ता हुआ नहीं देखते, बट after a week you see that your nails have grown. Yes Deepika, you can ask, you have any query? ये उर्दू में टीचर जो है वो स्टूडेंट से पूछ रहा है, आलम तुम आजकल ज्योग्राफी क्यों नहीं याद कर रहे? The teacher is asking the student that why you are not studying geography.
तो वो स्टूडेंट जवाब दे रहा है कि मैंने ज्योग्राफी पढ़नी छोड़ दी. I have left studying geography because my father is saying कि दुनिया की ज्योग्राफी बदल रही है. The world geography is changing. दुनिया का नक्शा बदल रहा है, तो इसलिए मैंने पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि दुनिया का नक्शा बदल रहा है. Now we have some proxy data. Apart from indirect data, we have some historical data to see that what was the temperature at a particular place in a particular month on a particular day 200 years, 300 years back, and what is today. The scientists they have studied the temperature log of captains of the ship, farmers log, travelers diaries, newspaper account, and other written record, and they have been able to work out the temperature from as far back 1370 April to September, from 1370 to 1879. Some farmer has recorded the temperature which he has recorded for his grape orchard. Now, if you can see this picture, proxy evidence, indirect evidence of temperature rise or ice melting. You can see a white rock block. This white rock block is present along a lake, and the rock of which it is made is not present in 30 kilometer and around area. So from where it has come? This kind of rock which does not match with the rock in the surrounding area, they are called as erratics. They are called as erratics. And erratics are brought by glaciers. That means there was in past glacier, a huge glacier which was able to bring this much big rocks. That is called as erratic. Now there is no more glacier because glacier has got melted because of global warming in last 2 lakh plus years. You must have heard of Ice Age. You must have heard of Ice Age. There is a film Ice Age. All of you should see this film. There are 5 volumes of this film, Ice Age. All of you should see this movie because this will let you know that what has happened in last, that is called हिमयुग. एक हिमयुग था जो 16 लाख 10 लाख साल और 60,000 साल, 10 लाख 60,000 साल पहले खत्म हुआ. ठीक है, और अगला हिमयुग आने की बात है. हम लोग 2 हिमयुग के बीच में रह रहे हैं. वी आर लिविंग इन अ mid of 2 ice ages. One has already got passed and one will come in future if the humanity allows it to come, if it doesn't control the global warming then. So this is an indication that there was a glacier. Now there is a volcano which was photographed in 1912, 1970, 2000 and 2006 in the same month, on the same day, and you can see that the ice has got lessened and lessened with each decade of year. Now another picture, if you can see, this is Sonmark. I have taken this picture. You can again see the erratic which I have photographed, and you can see a tea stall, a very small tea stall. Now this rock is not present in the surrounding area. This must have come from 10, 15, 20 kilometers from back. I have not been able to reach that source, but whatever I have seen here, this rock is not present. So that means we had more ice. Still you can see some ice. You can see a U-shaped valley. Whenever a valley made by glacier, it is always U in shape. The river valleys, they are V in shape. The glacier valleys are U in shape. So you can see that we had erratic here. That means there was a huge glacier which was present up to this stage. Now it is no more. Similarly, for indirect evidences, we have studied stalactites and stalagmites. These are hanging of rocks from the roof of the caves. That is called as stalactite. And there are some rocks growing from the floor of the caves.
they are called as stalagmite. In stalactite and stalagmite, we have different layers. If the scientists have studied the hydrogen, oxygen, and carbon isotopes and have plotted this graph to suggest that overall temperature is increasing as per the data from the speleothems or stalactites or stalagmites. So this is another indirect evidence. Then there's another indirect evidence which has come from the ice cores. आइस की कोरिंग की गई ग्रीनलैंड पे, अंटार्कटिका पे, बहुत सारी जगहों पे, और उन कोर्स को निकाला गया. उन कोर्स में जो बबल्स थे, उन बबल्स में जो गैस ट्रैप थी, उनकी स्टडी की गई और उनकी परसेंटेज लिखी गई कि कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंट नाइट्रोजन है, कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने परसेंट CO2 है, और उसके हिसाब से ग्लोबल टेम्परेचर्स देखे गए. तो आज की तारीख में करीब करीब 1,00,000 साल का रिकॉर्ड मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ आइस कोर्स टू नो व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ पास्ट एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज द कंपोजिशन टुडे. The study of isotopes of ice has suggested that from 1600 to 1850, the temperature of the world has remained same. But from 1850 to 1900, then from 1900 to 1950, and then from 1950 to 2000, the temperature has risen. But there are some points where temperature has gone down also. See the dip somewhere around 1975, somewhere around 1900, and somewhere around 1850, the temperature has gone down also. So that means global warming and global cooling both have gone in past. Another proxy evidence we can get is from the tree rings. If you cut a stem of a tree, you will find the rings. In this, you have light colored rings and dark colored rings. The dark colored rings indicate winter season and light colored rings say summer season. Winter rings are thinner and summer rings are thicker because the growth of plant in summer is more and in winters it is less. Now, if you record these number of rings and divide by 2, you will come to know the age of the tree. So the bark at the outermost part is youngest and the bark in the centermost part is the oldest. Take the sample of wood from each layer, go for oxygen and carbon and hydrogen isotope study, and you can work out the past temperature. From this also, it has been proved that overall temperature has gone up, but from 1800 to 1825, the temperature has gone down. Another study shows that not only carbon dioxide, but CH4 is also increasing. Whenever carbon dioxide has increased, the CH4 has also increased. CH4 is methane gas. In last 800 years, this is the data of 800 years. So you can see that from 800 to almost 50 years back, it is going up and down, it is going up and down, and so on, the zigzag pattern. But from 50 years beyond to zero, that is present, suddenly there is a spike. Suddenly there is a spike and it has gone up. We have added carbon dioxide in last 800 years from 280 to 550 per part million. यानी 10 लाख पार्ट में 280 पार्ट था कार्बन डाइऑक्साइड का, अब वो 550 हो गया है. We are adding 26 to 50 billion tons of carbon dioxide. And similarly CH4. Now lot of CH4 has been trapped. Lot of CH4 has been trapped in the
temperate region below the glaciers. अब जब ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो ये CH4 भी एक्सपोज हो जाएंगी और वो भी एटमॉस्फेयर में ऐड होने लगेंगी. तो इन सारे एविडेंसेस को जब हमने मिलाया तो व्हाट वी गॉट दिस एवरेज. दिस इज अ रिसर्च पेपर पब्लिश्ड बाय मैककिट्रिक कैनेडा and this paper is known as hockey stick paper. This paper is known as hockey stick paper. Why? You can see in the last the graph has risen just like a hockey stick. जैसे कि CH4 और CO2 increase कर रहा है. That's why it is called as hockey stick paper. So it has been proved that most of the temperature rise is because of addition of carbon dioxide, and this carbon dioxide has helped in increasing the temperature. और ये natural cause नहीं है, it is mostly the human cause. तो ये बात श्योर हो गई कि ये सूरज की साजिश नहीं है, खुद जमीन सेक रहे हैं. ये सूरज की साजिश नहीं है, खुद जमीन सेक रहे हैं हम. अब ये जो अगर क्लाइमेट चेंज है भी तो इसमें क्या इशू है, हम क्यों इससे डर रहे हैं? सो देयर आर सम ऑब्वियस रीजंस जो डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे हमें, और कुछ ऐसे रीजंस हैं जो हमें बहुत स्लोली इफेक्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेंगे. डायरेक्ट क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस, मोर रन ऑफ, लॉस ऑफ स्वीट ड्रिंकिंग वाटर, इंक्रीज डेजर्टिफिकेशन, मोर ह्यूमिडिटी, सीवियर वेदर, सी लेवल राइज. ये सारे हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं जो डायरेक्टली हिट करेंगे ह्यूमैनिटी को. हाँ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाई डू वी मेक ग्रीन हाउसेज? यू मस्ट हैव सीन दैट एग्रीकल्चरिस्ट, botanists and floriculturists, they make greenhouses. Previously, these greenhouses were made up of glass, shisha. Nowadays, they are using green colored plastic. So, why they are using it? To trap carbon dioxide and some heat so that plants, they can grow in that heat. Less obvious reasons: local to regional migrations of human beings, increase in certain diseases. It's a very important point. Thermohaline conveyor, you must have heard of El Nino and La Nina, which are the currents which produce due to differential heating of the ocean surface. That is called as, that's why thermo means temperature, haline means salinity. Those currents are produced because of differential temperature and salinity. Changed agriculture pattern, crop failure, animal migration, ecological imbalances, and crop losses due to extreme weather. आप प्रोड्यूस तो ज्यादा करेंगे एग्रीकल्चर, लेकिन फायर के इवेंट्स हो जाएंगे तो आपका सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जल जाएगा. एक्सट्रीम स्टॉर्म आ गया, साइक्लोन आ गया, तूफान आ गया, उससे लॉस हो जाएगा. सी दीज न्यूज. बिटर कोल्ड स्प्रेड्स ईस्ट इन यूएस. जापान में जेबी तूफान से जिंदगी की जंग. हीट टर्न्स शंघाई स्ट्रीट्स इनटू जायंट स्लंबर पार्टी. हाउसेस के जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा था, that has started failing. The overall temperature has risen so much that ACs are not able to bring down the temperature. People have to left their houses and they have started sleeping in the out, which we used to do in past when there was no fan and no AC. So we have to return back. We will have extreme flash flooding accompanied with landsliding. So all these are the direct aftermath. See what has happened in Dubai just few weeks ago. Biblical flooding in Dubai. What is biblical flooding?
What do we mean by biblical flooding? This is Dubai. I have been to Dubai in January, February. So beautiful, so maintained, but they could not cope up with the flash flood which they have. Biblical flooding is known as storm of Noah, या तूफान Nuh. Nuh was a prophet, and in his time there was a cyclone like this. There was a cyclone like this, and this has resulted into. Just a minute, I have lost my connection. Okay, I am sharing it from here. Just a minute. Just continue. Okay. Are you able to see now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sorry. There was a call and that has, no, you are not able to see perhaps. It has, just a minute. अब slide नहीं आ रही है. I have to, मैं अभी reshare करता हूँ. Okay, sir. नो सर स्लाइड नहीं आ रही है. हाँ, आ जाएगी. एक मिनट वेट कर. Wait कर लें आप लोग. Participant wait please. Just a minute. वो कॉल आ जाने से was disconnected. Yes sir, it's visible now. Is it okay now? Yes sir, but not in. यस सर. Okay. यस सर. Yes, sir. प्ले करना पड़ेगा मुझे. अभी प्ले हुआ नहीं है. Now it must be okay. So, in the time of Noah, there was a similar kind of flood, even much bigger. एक नूह ही नहीं जो हमें कश्ती में बिठा ले, वरना आसार तो मौजूद है तूफान के सारे. So this is what is the result of extreme climate. Now we are facing the almost same thing in Uttarakhand. We have not been able to douse fire. Still, up to Nainital, it has reached. Where will the Uttarakhandi go? Where will they go? Because if global warming persists, then forest fire will increase. Less rain because we are not able to douse it using our might. We are expecting rains to douse the fire. At the same time, 2-hour torrential rain claims at least 20 lives across Telangana. And what else? The heat stroke. In India, more than 600 people have died due to heat stroke this season. Even 33 people have died in election duties because of extremely high temperatures. Now, to check all these things, what is happening and what has happened? What is being done? Who will do the job? Who will bring us the respite? So for this, from 1972 onward, international conferences are being held. Summits are being held. Head of the states are coming and joining together. कि क्या किया जाए कि हम क्लाइमेट चेंज को चेक कर सके, रिवर्स कर सके. तो 1972 से कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई. मैंने सारी कॉन्फ्रेंसेस को लिस्ट नहीं किया.
मैंने क्योटो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 1997 से स्टार्ट किया, and I have listed all these important conferences which has taken place: 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 10, 11, 12, 2013, 2014, 2016, 2017, 17, चार तीन conferences, 2018, two conferences, 2019, and then COP27 in Egypt in 2021. 2022 there was no climate conference. Then 2021 Glasgow, 2022 Egypt, 2023 Dubai, and 2024 will be held in South Africa. But what we are going to get, what we have got from all these conferences, we are behaving like ostrich. See the leftmost cartoon. We are behaving like an ostrich. We are coming, we are discussing, we are creating a lot of carbon dioxide by traveling, and we are not getting any result. Time is running out. See the centralmost picture. And what actually happens, we after every conference we come up with a document, and what this document says, we need to replace all this gobbledygook with mumbo jumbo. एक से एक लैंग्वेज में एक से एक डॉक्यूमेंट बन के तैयार होके आ जाता है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता. COP stands for Conference of Parties. COP stands for Conference of Parties. Parties means countries and industry. But in times of India, we get this one-liner. Alex Smart said, in global warming, COP actually stands for Control or Perish. So in 2023, it has happened in Dubai. What they have said, that we are going to begin to end the use of fossil fuels very swiftly, in just manner, with equitable transition. So they have decided that they will cut on fossil fuel. But let's see that will they be able to do so or not. Roadmap to mission 1.5 degrees centigrade. If you can read this. Roadmap to mission 1.5 degrees centigrade. Significantly enable and enhance international cooperation for implementation over this critical decade and keeping 1.5 degrees centigrade within the reach. The issue today is 1.5 degrees centigrade means check our carbon dioxide emission so that temperature should not further rise to 2 degrees centigrade. अब ये कैसे होगा, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है. कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज मानने को तैयार नहीं है. वो कह रहे हैं, चाइना कह रहा है हम 2030 के बाद आई विल थिंक. इंडिया इज सेइंग दैट हम भी 2035 के बाद कम करना शुरू करेंगे, और जीरो तो हम 2050 तक भी नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे. व्हाई? बिकॉज we will have to check our industrialization. If we check our industrialization, our economic growth will be marred. Our economic growth, if it is marred, then our populace will not be able to live the way it used to or it should. So these are the issues. Why half a degree of warming is a big deal? 1.5 degree तो already warm हो चुका. अब आधे डिग्री की और बात है कि 2 डिग्री और ना वार्म हो, आधा डिग्री और ना बढ़े. इसको यहीं पे चेक करना है. क्यों? बिकॉज देयर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग effect, multiplying effect. From 1.5 degree, if 6% of insect and 8% of plants and 4% of vertebrates are going to extinct, it will become 18% of insects, 15% of plants and 8% of vertebrates. It will be doubled or tripled. Coral life will be lost. Sea level rise will go to a level 80 million people will suffer. Crop failure will be there.
ice will be lost. Extreme heat condition will be there, which we are facing today. And there will be water scarcity. So this is the issue. Now, I have talked about the global warming. The focus was global warming. It means climate change. अब इशू ये है कि what is the bigger issue? Climate change या warming हमारे लिए बड़ा इशू है या pollution बड़ा इशू, which is going to affect us immediately. Human-induced climatic disorders or human-induced environmental disorders. Almost 100 people world over are dying every 30 minutes due to various diseases caused by environmental disorders, means pollution. Lakh of people in the world are threatened by new threats of Zika, Ebola, dengue, cancer, flu, diabetes, corona with global warming. The diseases are attacking with much more lethality on human beings whose immune system is already compromised by adulteration and lack of physical activity. Polluted drinking water and atmosphere with no means of control are taking toll on human life. According to global burden of diseases, 138 people per lakh in India died because of pollution. Yani, if there is an air pollution, how can we save ourselves? The coronavirus, which has resulted into lakhs of deaths, in all those cities which were more bigger and polluted, there was more death. वो सारे cities जहां पे pollution ज्यादा था वहां deaths ज्यादा थी. क्यों? Because our lungs were already compromised. Our lungs were already compromised, and coronavirus has attacked our lungs. We are dying because of the air which we are inhaling. Death by breath. The pollution has become so high that it is beyond our control. There was a little respite. There was a little respite in between 2000 to 2007 or 8, you can see, when in Delhi, the fuel was switched from diesel and petrol to CNG. There was, if you can see the graph, it is showing a dip. But after that, it has increased. Why? Still we have CNG. ऐसा नहीं है कि CNG pollute नहीं करती. CNG भी pollute करती है, कम करती है. But see the rise in the graph. Why this graph has risen? Because the number of vehicles have increased in many fold. आज हर आदमी के पास 2, 3, 4 गाड़ियां हैं. Anybody can take a 4-wheeler. Anybody, because we have a loan facility. Yes, we have made the automobile industry a big industry. But what has it affected? What is the effect of that? Now, if you can see this graph, this I got in a Times of India in 2015. The top 10 selling drugs in India. Top 10 selling drugs in India. You can see 5 are for diabetes. Why? Why India has become diabetes capital? Why India has become diabetes capital? ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है कि हम डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गए? What is the reason? अब इसका रीजन मुझे 3 साल के बाद मिला. I got the reason, but after 3 years. So actually we are putting lot of stress. The humanity is putting lot of stress on their mother earth by population growth, by waste generation and disposal, by indiscriminate resource exploitation, by lot of energy demand and lot of carbon footprint, by lot of infrastructure development. Population growth will lead to need of more food production and distribution. Waste generation will pollute air, water and land. Indiscriminate resource exploitation will result into land degradation. Energy demand will, of course, affect the climate change because of carbon footprint.
infrastructure development is going to hit our ecosystem and loss of biodiversity. Waste production and disposal. This is the biggest issue we have. Whatever we do, all our action leaves some kind of waste. We have to see that how can we reduce, reuse and recycle at home. At home, not by municipality. We should not expect the municipality to recycle and reuse and help in reducing. We have to do it at our home. We have to dispose garbage very properly, well segregated into biodegradable and non-biodegradable. We have to keep hazardous waste, liquid, solid or gaseous in a different way. So the problem is that we are generating a lot of waste. And this is resulting into overall dirtiness of our environment, for which Swachh Bharat Abhiyan was launched in 2014. And it was envisaged that by 2019 we will be able to clean India. The country has expended 60,000 crore per year for Swachh Bharat Abhiyan. But what is the result? What is the result? It was started in 4,041 towns. 66,575 household toilets were created. But in what way? You must see around you. School toilets in 56,000 plus numbers were created. Permission was not given to schools, college, bus stands and dispensaries and petrol pumps if they don't have toilet. National sanitation campaign was started. Open defecation was checked. India was having 48% of open defecation, which was very, very high if you compare with the very small countries like Afghanistan, Congo, and Burundi and Bangladesh. This open defecation results into malnutrition and diseases. We had a lot of poor sanitation as far as toilets are concerned. Our toilet systems are not systematic. Open defecation and poor quality construction of toilets, they were a big problem. So what we need? We need better toilet, better disposal of waste as much we need food. So this is a issue. This is a big issue. That is waste and different kinds of waste. We had different landfill sites where we put our waste, all the waste which is collected from our home, they reach some waste disposal sites, and the waste are making hills. Nowadays, you can see a black and white picture of Ghazipur landfill sites which got collapsed. यानी जैसे लैंडस्लाइड हिल्स में होती है, वैसे ही लैंडस्लाइड वेस्ट हिल में हो गई और जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई. The colored pictures I have taken later on. So the issue is what to do. In India, we have more than 500 landfill sites which have full to their capacity, and now they need to be closed. They need to be closed. No more garbage should be put there. But we are not able to find out the new waste disposal sites. When Ghazipur landfill slides has taken place, the government has said that we will not put more waste into this hill. They have identified another village and they have started dumping. Rani Khera mein they have started dumping waste. The villagers, they came out and they said that we will not allow. Noida, for example, has a big residential system, but they don't have any space for waste disposal site. Their waste are going out of Delhi. They are going to Ghazipur and from Ghazipur to Meerut. So this is the problem. So not only Delhi and around, even Bangalore, even Bombay, everywhere we have this problem of waste, which has not only degraded our land, but also the water bodies. More than often in these waste disposal sites, fire used to catch up, and then we have a lot of carbon dioxide emission because of the fire. Now there's old statistics up to 2015. This I got in 2017.
that from 2000 to 2015 in Delhi, the waste generation has gone up. The waste generation has gone up from 2,400 to 8,700 tons per day. Means 2,075% increase. Just imagine, 100% increase, 200% increase, 300 nahi, 2,075% increase in the waste in Delhi, 1,750% in Bangalore, 155% in Hyderabad, 105 Mumbai, 60% in Chennai, Ahmedabad 48.5%, and Kolkata 8.3% only. Why it is so? That means more simple living means less wastage. लगता तो हमें ये है कि जो बेचारे अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन है वो ज्यादा वेस्ट जनरेट करते होंगे. नो, the rich people are generating more waste, and that is why that we have 2,000+ % of waste generation in Delhi and 1,750% waste in. What to do with this waste? Move to dump neighboring cities trash invites public ire. Diseases caused by Meerut waste ground claims 22 lives. Should Meerut suffer to keep Ghaziabad clean? The big issue is of waste generation. You must have heard of a place called as Seelampur in Delhi. The Seelampur is a notorious place for the drug menace. Why it is a drug menace? Because most of the population which is living in the Seelampur, they are actually rag pickers. They are dealing with the waste. They are actually scavenging waste disposal sites, and they take out those material which can be recycled. And that is a so dirty job that they do some kind of nasha. Ravish Kumar has covered this problem, and he said that दिल्ली को साफ रखने के लिए सीलमपुर को गंदा रहना होगा. दिल्ली को साफ रखने के लिए सीलमपुर को गंदा रहना होगा. Even Supreme Court is saying that Delhi is sitting on the time bomb of waste. And जूही चावला ने उठाया काठमांडू में प्रदूषण का मुद्दा. इंडिया में उठाने के लिए नहीं है, काठमांडू में प्रदूषण का मुद्दा उठाने के लिए है. The two cover page of a magazine, India Today, 1993 and 2014, they have made a cover story, Can we clean the mess? और 2004 में भी उनको दोबारा वही कवर स्टोरी करनी पड़ी, Dirty Nation. Can you identify this place? Can anybody identify this place? Behind Taj Mahal, I think so. Yes, sir. It's Agra. That is not so. Yes. और फोर्थ ग्राउंड में क्या है? फोर्थ ग्राउंड जो है जहां से फोटो ली गई है, फोर्थ ग्राउंड में क्या है? कूड़ा एंड करकट है. जैसे जगहों को भी नहीं क्लीन रख सके, जहां से हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है टूरिज्म से. अब मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी कि टॉप 10 सेलिंग ड्रग्स में 5 वर फ्रॉम द डायबिटीज. व्हाई वी हैव बिकम डायबिटीज कैपिटल. अब 2018 में ये न्यूज आ रही है कि बैड एयर लिंक टू डायबिटीज, इंडिया एट ग्रेटर रिस्क. अगर डायबिटीज बैड एयर से हो रहा है तब तो कोई नहीं बचेगा. मेरा आई एम फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट बस्ती इन यूपी, इज अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट, नो इंडस्ट्री, एंड इन माई डिस्ट्रिक्ट माई विलेज इज 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी. और जो हमारा फार्मर है, जो हमारा खेती करता है, जो मेरी एज का है, वो डायबिटिक है. यानी डायबिटीज हैव गॉन डाउन टू दैट लेवल. विलेजर्स को डायबिटीज क्यों हो रही है? क्या वो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं किसी से, या कोई वो बहुत ही रिच डाइट लेते हैं? दे ईट मोटा अनाज, दे डू लॉट ऑफ हेल्थ, लॉट ऑफ वर्क, बट स्टिल दे आर डायबिटीज. और कोविड की दवाएं ज्यादा बिकने लगी थी, तो फिर आ गया कि साहब वायरल बीटेन बैक, डायबिटिक मेट सेल रिबाउंड इन अप्रैल 2023.
अब हम क्या करेंगे, हम नए पैमाने लेके आ जाएंगे कि पहले जो है वो 100 ppm पे पॉल्यूशन मानते थे, हमने उसको 150 ppm पे कर दिया। व्हाट विल हैपन? ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, सरदार जी स्कूटर पे बच्चों को ले जा रहे हैं, व्हाट दिस शोज, ये क्या कर रहे हैं? ये धुएं से बचा रहे हैं अपने बच्चों को, जो पराली जलाने पे की वजह से पंजाब में फैल रहा है। तो पंजाब में पराली जलाई जाती है या हरियाणा में पराली जलाई जाती है, सबसे ज्यादा शोर दिल्ली से उठता है कि साहब वेस्ट यूपी, हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जा रही है। दिल्ली वाले ये नहीं देखते कि जो वो पॉल्यूशन व्हीकल से कर रहे हैं, उनका पॉल्यूशन दिल्ली से कहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या वो दिल्ली में ही रह रहा है? इट इज स्प्रेडिंग ऑल अराउंड डिपेंडिंग अपॉन द विंड पैटर्न। तो पंजाब में अगर पराली जलाई जा रही है तो सबसे ज्यादा तो सफर पंजाब वाले करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि पंजाब वाले बच जाएंगे। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम नहीं करेंगे तो अमेरिकन उतना परेशान नहीं होंगे जितना हम खुद पहले परेशान होंगे। अब एक नया फैशन आ गया कि साहब स्मोक टावर्स लगा दीजिए, वाटर स्प्रिंकल कर दीजिए पॉल्यूशन से बचने के लिए। नई नई मशीनें आ गई, अहमदाबाद में और गांधीनगर में और दिल्ली में और चंडीगढ़ में सब जगह स्मोक टावर्स लग गए, इसमें भी बिजनेस मिल गया। फर्स्ट क्रिएट डूम एंड देन मेक बूम। तो ये जो वेस्ट जनरेशन का इश्यू है, ये बहुत बड़ा इश्यू है, इसमें हमें चेक करना पड़ेगा। आज की डेट में हम लोग इतना मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, इतना मटेरियल यूज करने लगे हैं कि पहले हमारे पास एक पेयर शू होता था, एक पेयर स्लीपर होती थी। अब हमारे पास 5 पेयर शू हैं और 5 पेयर स्लीपर हैं। डेनिस डमिनास कह रहा है अपनी मदर से, लुक्स लाइक यू नीड मोर फीट, not more shoes. More feet, not more shoes. Garbage is a collector's item. Garbage is a collector's item. ये थ्रो करने का आइटम नहीं है। अगर मेरा if I have a right, I will ask all households that you should take out only biodegradable waste on daily basis, and non-biodegradable waste you have to keep it with you for week. On Sunday you go and submit it to the municipal site, और मैं उसके लिए पैसे भी देने को तैयार हो जाऊंगा कि मैं उसको खरीद लूंगा। Then we can check on the garbage. Pollution, the pollution, if it is going to affect our water supply, if it is going to our drinking water resource, maybe surface water, maybe groundwater, that is going to have another major problem, because fresh water, sweet water is only 2.5%. 97.5% is a saline water. So we have to see that this 2.5% water should remain clean. And of this 2.5% fresh water, sweet water, 68.6% is frozen. It's not with us. That means 30.1% is in underground, and we are using actually that because lakes and river water have become so polluted that we cannot use it directly. So we are thriving on the groundwater, and we are thriving on groundwater in so way that groundwater level is going down and down, because the recharge potential, the natural recharge potential is not being able to take pace with the withdrawal. The rate of withdrawal is very, 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 very high, and rate of natural recharge is very, very, very slow. You must have heard of groundwater harvesting. Groundwater harvesting या rooftop water harvesting. ये हार्वेस्टिंग आपके सिर्फ टॉप एक्वीफर को रिच कर सकती है पानी में, बाकी एक्वीफर को नहीं कर सकती। और टॉप एक्वीफर जो है वो पॉल्यूटेड है, और बहुत सी जगहों पे टॉप एक्वीफर है ही नहीं। The water level has gone down to 100 feet, 150 feet, 200 feet, and sometimes at 10 hundreds of meters also. So what to do? This is our athletic ground. What you see, the sprinkling, water sprinkling for irrigation, the grass for the ground. Previously, they used to have flood irrigation, means ट्यूबवेल ऑन कर दिया, पाइप लगा दिया और पूरे लान में पानी भर दिया।
that has resulted into lot of wastage of water. But sprinklers have saved the water. So we should go for sprinklers. But again, the day I have taken this picture of a sprinkler, the next day there was a rain. So when you are irrigating your field, check on your phone that is it rain going to be there in a day or two. So you hold on, don't waste your water, because it is very easy to put on the pump and start irrigating. But think, the water which has once taken out of the ground has been lost forever. I am going to have a very fast slides now. Drinking water, availability. It is very easy to buy water. But one bottle of water, to create one bottle of water from RO system, you are going to waste thrice volume of water. 1 लीटर पानी के लिए आपको 3 से 5 लीटर पानी वेस्ट करना पड़ेगा. ये ऑस्ट्रेलियन वाटर बॉटल है, इस पे एक प्रॉफिट की सेइंग लिखी हुई है कि डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू आर एट अ रनिंग स्ट्रीम. अगर आप नदी के पास भी खड़े हैं तो आपको वेस्ट करने का अधिकार पानी को नहीं है. Same issue is with biodiversity. That with infrastructure development, with more agriculture, we are converting our forest and hinterland into agricultural land and concrete land, and in this way we are losing lot of biodiversity. Biodiversity is needed because each organism plays an important role, and each organism is linked with the other organism. Lot of organisms, they are getting extinct, and we have to see that we should be able to maintain the biodiversity. So there's a lot of loss of life, extinction of the life. I'm going slightly somewhat faster because the time is almost running out. Now see, this is my own engineering college, and I have two pictures. Compare the two pictures. If somebody can identify this tree, कोई इस ट्री को आइडेंटिफाई कर सकता है? अशोका ट्री. अशोका ट्री, इसका ओरिजिनल साइज क्या होना चाहिए? इसका काफी बड़ा होना चाहिए और कॉनिकल शेप में होता है ये. बहुत बड़ा होता है. इट इज अ जायंट ट्री. कॉनिकल शेप की जो वैरायटी है, टीयर ड्रॉप, उसको हम कटिंग कर करके उसको हमने ये हालत कर रखी है. ये बताइए, ये इस पेड़ के साथ सही हो रहा है जो हम कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में? Around your college, around your university, are we doing this? Is it correct? Ultimately 2022 में क्या हुआ? 2 पेड़ सूख गए. Can you identify this? What is happening with this tree? ये हमारी यूनिवर्सिटी की जो मेन रोड है उसके फुटपाथ के किनारे लगा हुआ है. सारी पत्तियां इसकी नोची हुई हैं. All leaves are being torn up. By whom? By passers-by. चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई हो. अब ये लॉकडाउन में देखिए इसी पेड़ को. See the same tree in the lockdown. नहीं, ये तो कहीं ना ये चालू है. लॉकडाउन में देखिए पत्ते अपने को रिकवर कर गए. ठीक है, देखिए लॉकडाउन में हमारी रोड, इंजीनियरिंग कॉलेज की रोड, प्लांट्स हैव टेकन ओवर द फुटपाथ बिकॉज देयर वाज नो मूवमेंट. स्नेहा जी म्यूट कर लीजिए. स्नेहा जायसवाल. अब मैं 5 मिनट लूंगा, नॉट मोर देन 5 मिनट. ओके सर, ओके बढ़िए. So what is our responsibility? What is our responsibility at university and as a teacher? अगर हम एनवायरमेंट पे निबंध लिखने लग जाए कागज पेन पे और पेज फाड़ते रहे और लिखते रहे, तो हम एक्चुअली क्या है, वी आर नॉट डूइंग जस्टिस. What would be the solution? Solution कहाँ से आएगा? That is the biggest issue.
That is the biggest issue. We observe different dates. We observe different. Anil Kumar sir, please. We observe these different dates which are related to our Earth system. But what is the result? What is the ultimate result? What is the result of the cacophony created by Greta Thunberg? In Europe, students are going on strike on every Friday for highlighting the issue of climate change. Climate activists use drones to shut UK airports. Man walked 700 kilometers backward to highlight the importance of forests. US senator has doused himself by putting oil onto him and he died. कि जैसे मैं मर रहा हूँ पेट्रोल की वजह से, ऐसे मैं भी. अनिल कुमार साहब, प्लीज कीप योर माइक. and Anil Kumar, please keep your mic. CSIR के साइंटिस्ट ने कहा है कि साहब हर मंडे को हम प्रेस की हुई शर्ट पहन के आएंगे. एक IIT के प्रोफेसर हैं, वो 2030 तक घर नहीं लौटेंगे जब तक सोलर पावर को हर जगह पॉपुलराइज नहीं कर देंगे. तो नए नए आइडियाज लोग लेके आ रहे हैं. मेरा आइडिया है कि आप जो कपड़े एक दिन पहनते हैं उसको 2 दिन पहनिए, जो 2 दिन पहनते हैं वो 3 दिन पहनिए. सोलर पावर एक बड़े सॉल्यूशन के रूप में आ रहा है. अभी वो सॉल्यूशन लग रहा है, लेकिन बाद में शायद ये प्रॉब्लम हो जाए. बाद में ये, दिस इज आवर यूनिवर्सिटी सोलर फार्म, लैंड माउंटेड सोलर फार्म. वी हैव द बिगेस्ट सोलर फार्म इन आवर यूनिवर्सिटी. ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? Cycles. Cycles, the most environment friendly vehicle. And these cycles are those cycles which left over by the laborers which came from Haryana, Punjab during COVID period by cycle, and from Saharanpur they went by train. They have abandoned their cycle, their lifeline, and now they are all got wasted. In Copenhagen, 6 lakh is the population and 6,50,000 is the cycles in Copenhagen. Means anybody can take any cycle and can go anywhere. What we can do as an individual: save paper, save tree, reform the city. शहरों में वेजिटेशन बढ़ाइए, सेव पेपर, बैन होमवर्क. ये क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज है? स्कोर कार्ड अगर आप देख के बता दें मुझे, इसमें क्या बना हुआ है? ये 2 ग्रीन ग्रीन, ये इसी फाइनल ईयर का फाइनल जो हुआ है उसकी पिक्चर है ये. व्हाट इज दिस? ये जो 2 डॉट बॉल्स फेंकी गई हैं जिसपे रन नहीं बने हैं, उसकी जगह ग्रीन पेड़ लगाया गया है. यानी IPL में ये डिसाइड किया गया कि जितनी डॉट बॉल फेंकी जाएंगी उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे. खुदा करे ये टेस्ट मैच होता जिसमें डॉट बॉल बहुत ज्यादा होती है. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक, कोविड. 500 trees per dot ball. Yes. 500 yes. 500 trees per dot ball. Okay, that's good. तो मैं समझ रहा था कि only 1 tree for 1 dot ball. Thank you for adding to my information and knowledge. So what to do? Increase number of trees, reduce carbon emission, reduce concrete jungle, increase number of lakes. अब ये कैसे होगी? ये लेटेस्ट है, मैंने अभी कल का पिक्चर दिखा रहा हूं आपको. Our mayor has put this sheet at all the चौराहास. जितने क्रॉस रोड्स हैं उस पे ये बड़ी बड़ी ग्रीन शीट लगवाई है उन्होंने, ताकि थोड़ी सी शैडो आ जाए. ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये आज तक कभी नहीं हुआ. लेकिन गर्मी इतनी है कि जहां जहां रेड लाइट्स थी उससे पहले इन्होंने ग्रीन शीट लगवा दी, ताकि कम से कम कुछ रेस्पाइट हो. इन आवर यूनिवर्सिटी
we are treating water biologically. We have 2 water treatment plants. One runs on energy and one runs on biological treatment. And see the color of the water, the purified water. And we are using for this water for irrigation. ये मेरा अपना सिस्टम है मेरे घर में. आरओ का जो भी वेस्ट वाटर निकलता है वो मैं इसमें कलेक्ट करता हूं. इससे नहाता भी हूं, कपड़े भी धुलता हूं, फ्लशिंग में भी यूज करता हूं और पेड़ों को देता हूं, खासकर पेड़ों को देता हूं. I do not allow any waste water from my RO to go into the drain. अब आप इमेजिन कर लीजिए कि हमारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स में कितने आरओ लगे हुए हैं और उनके वाटर का क्या हो रहा है. 1 लीटर वाटर बनाने में आरओ से के लिए हमें कम से कम 3 लीटर पानी को वेस्ट करना पड़ता है. इशू ये है कि क्या होगा, ये क्या होगा. अब तक 5 एक्सटिंक्शन हो चुके. क्या हम छठे एक्सटिंक्शन के ऊपर जा रहे हैं? आर वी गोइंग टुवर्ड्स 6th एक्सटिंक्शन? Last 5 slides. We are moving towards 6th extinction. What will happen if the global warming goes like this? How humanity will survive? People have started writing book. People are using plastic trees for decorating their house. And डेनिस मिनास कह रहे हैं कि हमारी मदर तो इसमें पानी भी देती हैं. How do you explain your bad behavior? Everything can be put on climate change. ये फोर्टिस हॉस्पिटल की मैंने पिक्चर ली है, बस इसको मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कोई कि ये क्या है. What this diagram trying to show? सर मैं कहूँ, This is our lungs, sir. it is These are just a lungs. symbol What of lungs. we take. Okay, sir. और ये एक तरफ लंग हल्का दिखाया है, एक तरफ ज्यादा दिखाया है. क्या कहना चाह रहे हैं? सर जो ग्रीन लंग है वो प्यूरिफाई एयर है. दैट इज अ सिंबल ऑफ दैट इट इज अ हेल्दी लंग्स. एंड जो ठीक. दूसरे तरफ ड्राई है, दैट मीन्स व्हेन वी इनहेल पोल्यूटेड एयर इट मे बी डैमेज्ड. अब देखिए ये फोर्टिस हॉस्पिटल में पेंटिंग है, ये जो मैंने पिक्चर ले ली. ठीक है. अब फोर्टिस हॉस्पिटल में ये 2 प्लांट लगे हुए हैं. ये प्लांट क्या है, कैसे प्लांट्स हैं? These are bonsai, sir. Are they bonsai plants? नहीं, ये प्लास्टिक के प्लांट लगाए हुए हैं. Oh, we could not see that. I'm so sorry for that. अब आप ये देखिए कि this is called paradox. This is paradox, right, sir? पेंटिंग लगा रहे हैं कि ग्रीनिंग बढ़ाइए और आपने प्लास्टिक प्लांट लगा रखे हैं. ग्रीन अलीगढ़, क्लीन अलीगढ़, ये हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का है. वॉल पे प्लास्टिक की ग्रास लगाई हुई है. अब ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर आ रहा है. ये यानी ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वालों ने की है कि वो प्लास्टिक की ग्रास वॉल पे लगा दी है. अगर नहीं लगाते तो क्या हर्ज था? आप प्लास्टिक को प्रमोट कर रहे हैं और ठेले वाला प्लास्टिक को यूज कर रहा है तो आप उसको फाइन कर रहे हैं. All these plants which they have used for decoration, they are plastic plants. What we are going to get from these plastic plants? तो ह्यूमैनिटी अपने को बेवकूफ भी बनाती है. हमारे एक अलुमनस हैं राजन हबीब ख्वाजा. ही सेड दैट देयर इज ए प्रोवर्ब, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है. अब वो कह रहे हैं कि ये प्रोवर्ब अब चेंज हो गया है, जहान है तो जान है, जहान है तो जान. घर के गुलदानों में शाहिद फूल होंगे कागजी. ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे उर्दू के. घर के गुलदानों में शाहिद फूल होंगे कागजी. कागजी की जगह आप प्लास्टिक पढ़ लीजिए और पर्दों पर प्रिंटेड तितलियां रह जाएंगी. थैंक यू ऑल. दिस इज द लास्ट पिक्चर ऑफ आवर सर सैयद अहमद खान, द फाउंडर, who was lampooned in 1881 for his love towards nature.
आप देखिए ये स्नेक लिए हुए हैं, नागफनी के पेड़ हैं, तो इनको नेचरी जोगी कह के लैम्पून किया गया। 1881 का कार्टून है, यानी he was so fond of nature, biodiversity, and he has given us the university in which we are not doing justice with the biodiversity. Thank you. If you have any query, you can ask, you can write your comments in message box. Participants, if you have any query with Professor Mohammad Masroor sir, he is with us now. You can ask any question. Assalamu alaikum, sir. Am I Walaikum audible assalam. to you? Haris, yes, Sir, Dr. Haris. Thank you for your nice lecture. I am from Kerala. Okay. I'm working at Aligarh Muslim University, Malappuram Center. My name is Dr. Haris. Okay. Sir, we have technological advancement these days, Yeah. and this heat waves and global warming is increasing. And my hypothesis is it will be more increasing because technologically we are more advanced. What is your response about this hypothesis? You see, whatever we are doing, we are putting back the carbon dioxide into the system. This is the issue. Now you see, we are very technologically advanced. We get solution of each and everything. Now for warming, what is the solution? Air conditioning. But imagine, they are air conditioners, they are cooling your inside, but they are equally warming the outside. Whatever cooling you are getting from your ACs, that is the technology, but what is happening the outside? Ultimately, these air conditions are going to fail. For example, in my car, my air condition is not working. It's not able to cool down my car because of so much of heat. Solution will come. Some kind of solution will come, but it will come after harming our earth to a degree that different kind of injuries we will be inflicting the earth. Any other question, please? In our region, AC record selling was there in this time. Yes. But if everybody buys the AC, then what will happen to outside? Any other question? Thank you, Aftab Sahab. No, sir. Thank you, sir, very much, sir, on behalf of HRDC, AMU, Aligarh Muslim University, for your this very informative and nice deliberation. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Participants, there is one announcement for you. A pre-test has been organized today for this program, that is Online Malvi Mission Teachers Training Program, NEP 2020. You have to answer this question which has been already shared in your WhatsApp group within 1 hour, so that we want to see how much you know about the NEP 2020. And after completion of this program, we will conduct another test for your this understanding about these topics which our esteemed speaker will deliver during the course of time. So this is the first test, and this is the first day test, and you have to answer within 1 hour from the time of sharing this question Google form. And one more announcement and request participants, while our learned speakers are delivering his or her lecture, kindly mute seriously your speakers, because your 1 or 2 words can deviate them from the topics and from their smooth deliberations. So I request you humbly that kindly be serious in this